you. And I'm continuing from where we left in the morning. So these are the science and tech current affairs from December till March right now. Okay. So measles and rubella. So they are in news. Measles and rubella by 2023 end. और ये डेडलाइन इससे पहले हम 2020 वाली मिस कर चुके हैं. मुझे लगता है 2023 वाली भी मिस ही होगी. बट एनी हाउ, अब what are these two? So measles, highly contagious virus, causes death among young children globally. It's an RNA virus. Okay. क्या करता है? It causes blindness, encephalitis, severe diarrhea, ear infection, and pneumonia. Rubella, it's German measles. It's the same. उसकी जर्मन बहन है. Again, single stranded RNA virus. वही सेम सारे इसी के साथ भी इश्यूज. इसीलिए इनका जो मीजल और रुबेला की वैक्सीनेशन है वो भी कंबाइंड होती है. और हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर मीजल और रुबेला की वैक्सीनेशन हम देते हैं. अब मिशन इंद्रधनुष इज द नेम ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ओनली. ठीक है. और इसका आगे जो नया संस्करण चल रहा है दैट इज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष. नथिंग न्यू अबाउट दैट. ओके. अब जो वैक्सीन चलती है दैट इज मीजल्स, मम्प्स, रुबेला, वैरिसेला, MMRV कॉम्बिनेशन वैक्सीन चलती है. तो ये वैक्सीन का नाम याद रखना है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, एक ये नाम याद रखना है. एंड देन मीजल एंड रुबेला वैक्सीन किसको देते हैं? 9 महीने से 15 साल तक के बच्चे को दिया जा सकता है. सिंगल शॉट वैक्सीन एक बार देना जरूरी है. WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन. हमने फैट्स के बारे में पढ़ा था, अभी सिस और ट्रांस लिंकेजेस के बारे में भी पढ़ा था केमिस्ट्री के अंदर. सिस लिंकेजेस कैसी होती हैं? एक डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर इस तरह से लिंकेज हो, इधर एक ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, एक इधर, दिस कॉल्ड ट्रांस. ठीक है. अगर एक ही तरफ हो जैसे X एंड Z, सो दे आर सिस. X एंड Y दे आर ट्रांस. सो ट्रांस फैट्स में इस तरह की लिंकेज है. ठीक है. ओके, लेट्स सी व्हाट they do. So according to WHO, 5 billion people globally remain unprotected from harmful trans fats, increasing their risk of heart disease and death. WHO first called the global elimination of industrially produced trans fats in 2018, and elimination target was set for 2023. But again, ये target भी कोई eliminate होता लगता नहीं है. Okay, currently 9 out of 16 countries with highest estimated population of coronary heart disease deaths caused by trans fat intake do not have a best practice policy. And Australia, Azerbaijan, Bhutan, Ecuador, Egypt, Iran, Nepal, Pakistan, and Korea are these countries. Imagine even Australians, they are the most laid back about eating. Why? Australia, but despite they being fitness freak, there are the extremes in Australia. You will find extreme fat and extreme fit. Okay, so best practices in trans fat elimination right now. So there are 2 best practices that are given. First, mandatory national limit of 2 grams of industrially produced trans fat per 100 gram of total food or total fat in all food. Then mandatory national ban on production or use of hydrogenated oils, vanaspati ghee, as an ingredient in all foods, क्योंकि वो trans fat का major source है. Okay, तो trans fat, saturated और unsaturated, 3 तरह की हमारे पास fats हैं essentially. तो trans fats कैसे होते हैं? So they are unsaturated fatty acids that come either naturally or are industrially sourced. Naturally occurring trans fat comes from ruminants like cow and sheep. Industrially produced trans fat are in the process such as hydrogen to the vegetable oil, तो वनस्पति घी जो बनता है solid or partially hydrogenated oil. So where do you find trans fats? So hydrogenated vegetable oil, fast foods, cakes, pastries, chocolates, deep fried food. You may buy the best chocolate in the world, but it will have trans fats. Okay, it may be a Lindt, it may be anything. वो लिख सकते हैं मतलब नो ट्रांस फैट और जीरो ट्रांस फैट. वो जीरो ट्रांस फैट के अंदर भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट होता है. ठीक है.
Then vegetable fats. So even in them, there are saturated fats like coconut, palm oil, 3-in-1 and 2-in-1 beverages, creamers, condensed milk, and all that. So they also have saturated fats which are not good for you. Then animal fats of any kind are not good for you. They say, लेकिन इंडिया में हम कहते हैं कि घी ठीक है चलेगा, ठीक है. Then polyunsaturated fats such as palm oil, soybean oil, sunflower oil, seed, or cold water fish. So they are fine. Monounsaturated fats such as olive, canola, peanut, sesame, avocado, and most nuts, they are fine. So unsaturated fats are okay. Saturated or trans fats are not okay for you. बस prelims में हमने ये factual information याद रखनी है. Okay. Why they are bad? So trans fats, they have been linked to increased heart disease because they can raise the bad cholesterol, that is low density lipoprotein, in the blood and lower the good cholesterol, that is high density lipoprotein. Okay. बस इतना याद रखना prelims के लिए, इसी में से क्वेश्चन बनेगा अगर बना होगा. अभी इसको रोकने के लिए इंडिया में ऐसे कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईट राइट मूवमेंट. 2018 में जब WHO ने ये प्रोग्राम शुरू किया, साथ ही हमने ये शुरू कर दिया, ईट हेल्दी ईट सेफ. स्वच्छ भारत यात्रा, हार्ट अटैक रिवाइंड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो इन्होंने कहा कि लेस देन 2% ऑफ ट्रांस फैट फ्रॉम जनवरी 2022. तो फूड आइटम्स के अंदर इससे ज्यादा ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए. ठीक है, बोल दिया. लेकिन जो रेस्टोरेंट लेवल पे प्रिपेयर होके आपको दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल KFC, द फ्राइड चिकन दैट यू हैव इन KFC, इट हैज द मोस्ट ट्रांस फैट पॉसिबल. ओके, नाउ हाउ वुड FSSAI गो एंड फाइंड आउट ईच एंड एवरी KFC आउटलेट की वो कितना ट्रांस फैट सोल्ड कर रहे हैं? ठीक है ना, वहां तो बंदा बाय चॉइस ट्रांस फैट खाने ही जा रहा है. फाइन. नाउ ग्लोबली यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट. ये मेंस के लिए ठीक है, प्रीलिम्स के लिए नहीं चाहिए. देन भार OS सॉफ्टवेयर, इसके बारे में 2-3 चीजें याद रखना. पहला, IIT मद्रास ने बनाया है. दूसरा, ये आत्मनिर्भर भारत का पार्ट है और इट विल बेसिकली रिक्वायर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया. दैट इज द मेन कंसर्न व्हाई इट हैज बीन क्रिएटेड, because lot of bloatware and malware is there on Android and iOS ecosystems, which will not be there on BharOS. Okay, so it will be native over the air updates. So iski wajah se security updates and bug fixes will be automatically installed rather than the user having to check for the updates and implementing them on their own. मतलब आपकी चॉइस नहीं है, कोई भी अपडेट आना होगा अपने आप से हो जाएगा. ठीक है. देयर आर नो डिफॉल्ट ऐप सेटिंग्स. आपको देखना है आपको कौन सी ऐप डालनी है फोन में, कौन सी नहीं डालनी. तो ये बेसिकली आपको एक जिसको बोलते हैं फर्मवेयर के तौर पे मिलेगा. उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस डालनी है आप डालिए. इट्स वर्किंग लाइक दिस. ओके, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सो इट वांट्स टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस अपॉन फॉरेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन स्मार्टफोन्स. एंड there is one negative angle also, that's more for the mains aspect, if at all asked, that is digital lockdowns. So in COVID you have all faced physical lockdowns. In future you may face digital lockdowns also. In China, for example, people have been in digital lockdown since COVID lockdown, physical also. Nothing was posted by those people online because they were not allowed to. Why? Because China has its own Facebook, its own WhatsApp, its own OS, its own everything. Okay. So nothing goes out of China without the Chinese government wanting it to go out. Very few things got out as to how COVID-19 got leaked and everything. And based upon those few things, everything else happened, you know. Okay. Ab dekhiye, how is it different from Google Android? So it is on based on the Android open source project and is somewhat similar to Google Android. However, it does not come preloaded with Google services. Google services basically means that the Google Cloud, the Gmail, the Google Chrome browser,
Essentially, whatever you search, surf, etc., the access to that is with Google. Right now, if you open a website or a document on Google, there is an access, backend access always with Google, and it can store that particular page within its server if it wants. It can create instructions to store all the pages that you have opened on its own server. Okay. In the name of faster opening of such page next time, you will also allow that automatically without even reading the entire thing. So in this nature, sometimes if, for example, there are government secret communication happening within the government agencies, that communication will also be available with Google. And that's what we don't want. That's also the reason why we need to create our own OS. Okay. So Android phone with stock OS usually have Chrome set up as a default browser. Bar OS makers are looking to partner with DuckDuckGo for its default browser. Why? Because it's a privacy-focused browser with several privacy-centric features like anonymous browsing mode and privacy grade. Anonymous browsing mode तो हर एक में होता है. If you go for Control Shift and N in your browser, so you will have a incognito mode. But in incognito mode also, it's not your IP is still known. Your IP address is known, and based upon that you can be tracked. But here in anonymous browsing, your IP address will not be known. Okay. Lumpy skin disease in cows. So Punjab airlifted 25 lakh doses of goat pox vaccine to carry out a free vaccination campaign for early prevention of cattle from lumpy skin disease. ये बहुत न्यूज में रहा पिछले एक साल के अंदर लंपी स्किन डिजीज, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए. क्या है ये देखिए. इट इज कॉज्ड बाय पॉक्स वायरस. एक तो ये याद रखना, जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, वैसे ही पॉक्स वायरस. It can spread through the saliva and nasal secretions. It is transmitted through the bite of an infected mosquito or a tick. It's not zoonotic, which means it can't infect people. Main symptom: skin nodules, lumps in one area or all over the body. Effects: reduced milk production, reduced male fertility, weight loss, pregnancy loss. Treatment: there is no specific remedy. You can give antibiotics, anti-inflammatory drugs, vitamins, जैसे हम लोग लेते हैं, to prevent any secondary infection, but it will automatically heal over a period of time if all this is given. Then outbreak. So in mostly Southeast Asia, there is outbreak. In Malaysia, just 0.1% of cattle tested at 9108 farms have the disease. So least in Malaysia, but India has a lot of load for lumpy skin disease. Okay. Mortality rate is less than 10%. So not a big worry, but a lot of trouble for the cattle. So बस इतना ही LSD के लिए. India's first solar mission. चंद्रयान हमारा जा रहा है, मंगलयान जा रहा है. अब नेक्स्ट देखते हैं कहाँ जा रहा है. So it is Aditya L1 mission. So ISRO is planning to launch the Aditya L1, which is the first Indian space mission to observe the sun by June or July 2023 to observe the sun and the solar corona. तो बस मिशन का नाम और उसका पर्पस क्या है, कौन भेज रहा है, इतना याद है. ठीक है. And recently, the visible line emission chronograph, the primary payload of Aditya L1, PLEC, ये याद रखना P के लिए. So this has been handed over to ISRO by Indian Institute of Astrophysics. सन की लेयर्स ज्योग्राफी में पढ़ी है सारी, वही है. अभी आदित्य L1 मिशन कौन से रॉकेट पे जाएगा? PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle, and there are 7 payloads. There's WELC, there is Solar UV Imaging Telescope, Solar Low Energy X-ray Spectrometer, Aditya Solar Wind Particle Experiment, High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, then Plasma Analyzer Package, then Advanced Triaxial High Resolution Digital Magnetometers. इनमें से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है सिवाय इसके, बस. ठीक है. वो ये वाले नाम यूज नहीं करते आमतौर पे. ये L1 OS, पापा, एस्पेक्स नहीं पूछेंगे. फर्स्ट वन होता है जो आदित्य L1, बस यही पूछेंगे कि इसका क्या पर्पस है.
मोस्टली ये मैच द फॉलोइंग टाइप होगा और मल्टीपल ऐसे मिशंस पूछे जाएंगे. L1 here means what? So L1 means the Lagrange point 1. It is one of the 5 Lagrange points as we have studied. Lagrange point क्या होता है, जहां पे पहले भी हमने देखा सन और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन चलता है वो मैक्सिमम जहां पे होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से, उसको बोलते हैं Lagrange point. Okay, and they can be used by the spacecraft to reduce fuel consumption needed to remain in position. The satellite placed in the halo orbit around L1 has a major advantage of continuously viewing the sun without any occultation or eclipses. So that's the aspect. So L1 point is home for the Solar Heliospheric Observatory Satellite SOHO, so which is an international cooperation between NASA and ESA. तो ऑलरेडी यहाँ पे एक सोहो एयरक्राफ्ट है, ये भी पता होना चाहिए. तो L1 किधर है, ये रहा. दिस इज L1, L2, L3. एक तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस दे आर आइदर वेरी हाई और वेरी लो. ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चलती है, ऐसे कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, लाइक दिस. सो ऐसे ट्विस्ट करते जाती है स्पेस को. तो ये वाले ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे कंप्रेशन है मैक्सिमम. ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स के अंदर यू गॉट लाइक दिस. अपने आप में ये ज्योग्राफी का एक अपना क्वेश्चन हो सकता है, लैग्रेंजे पॉइंट्स, कि विच ऑफ दीज लैग्रेंजे पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन. सो L1, L2, L3 आर इन अ स्ट्रेट लाइन. L4 और L5 जो है वो अलग एक्सेस पे है. देन ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना. अभी और कौन से सन पे मिशंस जा रहे हैं, ये प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो नासा का कौन सा है, पार्कर सोलर प्रोब. देन हीलियोस 2 सोलर प्रोब, so this is Germany. Then solar orbiter, so this is ESA plus NASA, and other active spacecrafts monitoring sun, so these are ACE, IRIS, etc. बहुत सारे हैं, लेकिन आपने ये 3-4 याद रखने बस. सोलर ऑर्बिटर, ESA plus NASA, Helios 2 सोलर प्रोब, NASA plus वेस्ट जर्मनी, पुराना जो होता था अब तो जर्मनी एक ही है. देन NASA स्पार्कर, दैट्स दैट. देन न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, इसके बारे में हमने बात किया कि ये जो ब्रेन को रेप्लिकेट करने वाली कंप्यूटिंग हम करने की कोशिश कर रहे हैं. So recently, team of scientists at Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research has developed artificial synapse for brain-like computing or neuromorphic computing. So they have used scandium nitride semiconducting material. तो ये बेसिकली ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी है टू बी सेमीकंडक्टर इन नेचर. नाउ, and complementary metal oxide semiconductor compatibility to develop a brain like computing. What is in the brain? It's neurons simply, which have a sodium potassium kind of a pump to which electrical signals get transmitted, and whatever memory is stored or whatever they want to process, that's how they work together. Okay. So neuromorphic hardware aims to mimic a biological synapse that monitors and remembers the signals generated by stimuli. जैसे हमारा दिमाग कोई मेमोरी एक क्रिएट करता है ना बायोलॉजिकल साइनैप्स के थ्रू, वैसे ही स्कैंडियम नाइट्राइड भी उसी तरह का एक इलेक्ट्रिक सिग्नल लेके और एक मेमोरी क्रिएट करेगा. इट विल ट्राई टू रिमेम्बर अ सिग्नल अकॉर्डिंगली. आज हमारे पास मशीन लर्निंग तो है, पर वो मशीन लर्निंग एक हार्डवेयर के अंदर डेटा स्टोर करने तक सीमित है, और वो स्टोर्ड डेटा को मल्टीपल डेटा सेट्स को एक्सेस करके इकट्ठे प्रोसेस करने तक सीमित है. लेकिन हमारा ब्रेन अलग तरह से काम करता है. हमारे ब्रेन में सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह है, और जब उसको एक्सेस करना होता है हमें कोई एल्गोरिदम रन करने की जरूरत नहीं है अलग से. इसीलिए कोई कंप्यूटिंग टाइम फ्रेम नहीं है, इसीलिए जो एनर्जी यूजेज है वो बड़ी एफिशिएंट है. तो हम कुछ वैसा ही करना चाहते हैं कंप्यूटर्स के लेवल पे भी. ओके, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, सोचने वाली बात. क्वेश्चन आएगा ये,
scandium nitride. So this is what is being used to make a न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर. या फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग होता क्या है? सो इट्स ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग. बस यूपीएससी ना बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन डालता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता वो. ठीक है, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, कैसे बनेगा, ब्ला ब्ला नहीं चाहिए. वरुणा, so 21st edition of bilateral naval exercise between India and France. So वरुण, that's it. इतना ही पढ़ना है. 2001 में शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है. Then Shukryan 1. So this is Venus mission by ISRO and this has been postponed to 2031 क्योंकि Venus पे जाना हमें अभी जरूरी नहीं लग रहा. This was expected to be launched to 2024 but we have delayed it. Okay, so Venus mission planned for 2031 by US and Europe. So they are also Veritas and Envision. तो अभी USA को भी इतनी जल्दी नहीं है तो हमें क्यों हो रही है, इसलिए हमने भी क्यों लगती 2031 में भेजे. It's like this. ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो फोकस है वो आदित्य L1 और चंद्रयान 3 के ऊपर है, जो कि 2023-24 में हमें करने. और बाकी देखेंगे, पैसा आएगा तो करेंगे. फाइन. शुक्रयान 1 पे अभी और ज्यादा फोकस नहीं करना फिलहाल के लिए. Presently, what all missions have been there on Venus? So US Mariner series 62 से 74, Pioneer Venus 1, Pioneer Venus 2 78, Magellan 1989, ये सारे यूएस के हैं. जापान वेंद्रा सीरीज वेगस 1 and 2, जापान एक्ट्सकी, यूरोप वीनस एक्सप्रेस. सो मेनी हैव बीन देयर. इतना ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, वेल्ड प्लैनेट, वॉल्केनिक स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, वो सारी चीजें यहीं इन्हीं स्पेसक्राफ्ट्स के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है. ठीक है, ओके. इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी आमतौर पे पूछता है कि कौन सा स्पेसक्राफ्ट है और किस पर्पस से गया. तो 2014 में ये जो क्वेश्चन आया था ये बेंचमार्क क्वेश्चन है. इसी तरह से क्वेश्चन आगे भी बनेगा. ठीक है, अभी मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो, उसके बारे में 2016 में जो पूछा गया था वो ये सारे. चंद्रयान 3 और ये आदित्य L1 अभी लॉन्च नहीं हुए हैं तो इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है, बट एटलीस्ट आपको इसकी बेसिक्स पता होने चाहिए. ठीक है. देन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट गोनोरिया, तो दिस हैज हिट कीनिया. अब इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाट इज गोनोरिया? दिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड कॉज्ड बाय बैक्टीरियम निसेरिया गोनोरिया. बस, फिनिश्ड. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होती है? तो कई बार लोग अननेसेसरली मेडिसिन खाते रहते हैं, फिर वो जो माइक्रोब्स हैं उनकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेडिसिन से. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम सुपर बग्स लाइक दिस. तो see, this is the ability of microorganisms to resist the effect of antimicrobial drugs. Okay? इसीलिए कहते हैं ना कि जब तुम एंटीबायोटिक्स खा रहे हो अननेसेसरली तो वो परेशान करेंगे तुम्हें, फिर नेक्स्ट टाइम फिर तुम्हें और ज्यादा सीवियर डोज में एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा. टीबी के केस में फॉर एग्जांपल इंडिया में XDR टीबी बोलते हैं एक हम, XDR टीबी. पहले तो होता था MDR टीबी, दैट इज मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस इन ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस. अभी XDR मींस ऑल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस, ये वाला स्ट्रेन भी इंडिया में. ठीक है, ओके. सो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 highlights the problem of antimicrobial resistance and calls for effective action to address it. लेकिन इसका कोई इफेक्टिव एक्शन अभी तक हो नहीं पा रहा है. जो ओवर द काउंटर मेडिसिन इंडिया में मिलती है, जो अच्छा भी है, उसका बुरा एस्पेक्ट ये है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ हाइजीन है. ऑफ कोर्स हॉस्पिटल्स के अंदर सुपर बग्स वहां क्रिएट होते हैं सबसे ज्यादा. ठीक है, ओके. रेयर अर्थ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड इन स्वीडन. अभी रेयर अर्थ्स बहुत मिल रहे हैं. इंडिया में कौन सा मिला था JNK के अंदर? कुछ याद है या नहीं? लिथियम. शुक्र है, हाँ लिथियम ही. ठीक है. So Sweden state-owned mining company LCAB discovered Europe's largest deposit of rare earth metals. So situated in Kiruna. अब ये कई बार ना places in news बोल के geography का question बना देंगे इसको. Where is this located? Kiruna. So this is in northern region of Sweden.
बस बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेयर अर्थ में क्या आते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, यूजेज क्या है? देखिए, इंडिया हैज 6% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ्स, प्रोड्यूसेस ओनली 1%। ज्यादातर चाइना से इंपोर्ट करते हैं। देयर आर इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, दिस इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर माइनिंग एक्सट्रैक्शन of the rare earth elements. Monazite beach sand found in many coastal areas, that is the main resource. And the prime focus is to provide thorium to Department of Atomic Energy, which is extracted from monazite sand in India. Okay, so that is about Indian rare earths. हम इसको use कहाँ करते हैं? Consumer electronics, computers, networks, communication, clean energy, national defense. For example, scandium is used in televisions and fluorescent lamps. Yttrium for the treatment of rheumatoid arthritis and cancer. Rare earths are also used in space shuttle components, jet engines, turbines, drones. Cerium is the most abundant rare earth element essential to NASA's space shuttle program. So many rare earth. Electric cars के लिए, internal combustions के लिए ये sorry, from switching from internal to electric cars हमें rare earth की जरूरत है. One of them is cerium only. So अलग अलग हम इनके alloys use करते हैं with lithium to make batteries. Then solitary wave in Martian magnetosphere. Let's see. So Indian Institute of Geomagnetism, Autonomous Institute of Department of Science and Technology has found evidence of solitary waves in the weak magnetic field around the Mars for the first time. अभी देखना बस यही है कि ये है क्या. ठीक है. Scientists used high-resolution electric field data from NASA's MAVEN spacecraft to make the discovery of the solitary wave. Unlike Earth, the planet Mars does not have any intrinsic magnetic field. खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. क्यों? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होने का क्या कारण है? हमारी जो इनर कोर है वो है लिक्विड, आउटर कोर है सॉलिड. तो ये जियो डायनेमो जो चलता है, इनर कोर अलग डायरेक्शन में घूमती है, आउटर कोर अलग डायरेक्शन में घूमता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है. इनर कोर में निकल और आयरन है और आउटर कोर में निकल और मैग्नीशियम है. आयरन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है. तो दीज आर द टू बेसिक रीजंस, है ना. लेकिन ऐसा कुछ भी मार्स के लिए नहीं है. So this allows high-speed solar winds to interact directly with the Mars atmosphere like an obstacle in the flow. तो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिपेल करेगी और उसके अराउंड होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल जाएंगी. So it has been suggested that even in a weak and thin magnetosphere as that of Mars, frequent occurrences of solitary waves can be observed. However, despite several missions to Mars, the presence of solitary waves in the Martian magnetosphere has never been reported earlier. The waves were found mostly in the morning and evening on the Mars, the altitude of 1,000 to 3,500 kilometers, and their exact cause is still unknown. तो हमारा कंसर्न क्या है, solitary wave होती क्या है? So these are distinct electric field fluctuations, bipolar or monopolar, that follow constant amplitude phase relations. Their shape and size are less affected during their propagation. They are called solitary waves. They have been found to play a significant role in the dynamics of various physical systems, such as Earth's magnetosphere and in the Martian magnetosphere. Solitary waves का ये काम है. तो प्रीलिम्स में एक तो solitary waves क्या होती हैं ये याद रखना है. दूसरा, मार्स के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इंट्रिंसिक. दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, दैट्स दैट प्रीटी मच. लिटिल बिट फैक्ट्स अबाउट मार्स दे हैव गिवन. जो मार्स मिशंस अभी तक जा चुके हैं ये याद रखने. प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है. एक्सो मार्स रोवर, ईएसए, Tianwen-1 चाइना, यूएई's होप मार्स मिशन, ये लेटेस्ट गया 2021 के अंदर. देन ये पहला भी था यूएई के द्वारा एनी ऑफ द स्पेस मिशंस दे सेंट. इंडिया's मार्स ऑर्बिटर मिशन और मंगलयान 2013. Okay. Then segregate video games from money games.
अभी ऑनलाइन गेमिंग मार्केट्स के अंदर आमतौर पे कोई ऐसी सेग्रीगेशन लीगल तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट अब ये करना चाहती है। क्यों? तो money games are those in which you can bet money and win money. That is to be thought of as money game. If you pay and play, for example, you bought a game and then you're playing it, that's fine. That's just a video game. Yes. So that's what the lobby for video gaming industry wants, a differentiation. Okay. Now, India की video game market कैसी है? हमारे यहाँ पे पीसी और मोबाइल गेमर्स 2022 में करीब इतने लोग, 400 मिलियन। ठीक है। रेवेन्यू देखा जाए 2022 में तो 700 मिलियन का रेवेन्यू है इन लोगों से। ठीक है। आगे आने वाले 4 साल में ये डबल होने वाला है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। 34% of the gamers of India spent money on games in 2022. That means more will spend money going forward. So Indian gamers spend an average of 14.1 hours per week, so means 2 hours per day on mobile games. Challenges क्या है? There is a regulatory uncertainty. Game distribution and marketing is more difficult due to privacy, Apple's privacy changes. Then various kinds of games are there. There is no framework for the IP creation. कि जब आप गेम खेल रहे हो तो आपका आईपी एड्रेस पर्टिकुलरली नोट हो, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। आप कौन से सिस्टम से गेम खेल रहे हो कोई पता नहीं चलता। फिर चीट कोड्स होते हैं उसमें। बहुत लोग आजकल टेररिस्ट क्या कर रहे हैं, गेम्स के अंदर एक डायलॉग होता है, चैट बॉक्स होता है, मैसेजिंग बॉक्स होता है। जो लोग ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं शायद उनको पता होगा। तो उसमें जो तुम मैसेज एक अपने दोस्त को भेज रहे हो जो तुम्हारी टीम का मेंबर है, या ऑनलाइन गेम प्ले के अंदर, या अदरवाइज भी तुम भेज सकते हो, तो वो मैसेज अब ना तो कहीं इनक्रिप्ट हो रहा है, ना किसी सर्वर डेटा पे जा रहा है, ना कहीं और जा रहा है। वो बस तुम्हारे दो डिवाइसेस के बीच में ही है। अब कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी उसको ट्रैक करने बैठेगी? उनको नहीं पता तुम मैसेज कब भेजोगे। और वो वीडियो गेम वाले का सर्वर अगर उठा के उसको पूरा स्क्रिबल भी करेंगे तो इतने सारे एट अ टाइम ऑनलाइन प्लेयर्स होते हैं, सबको मॉनिटर करना ही मुश्किल है। कोई भी अगर बहुत चलती हुई गेम है तो भी उसको मॉनिटर करना मुश्किल। और अगर कोई रिमोट सी गेम पे ऐसा कुछ करी जा रहा है जो शायद कोई आज खेल भी ना रहा हो, या अपनी गेम बना के अपलोड कर दे और उसके ऊपर ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं टेररिस्ट लोग, तो आपको क्या पता चलेगा? उसमें भी अगर सीधा मैसेज लिखने की बजाय कोई इनक्रिप्टेड अपने हिसाब से लिख के बिठा रहा है कोड लैंग्वेज में, तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से गेम्स अपने आप में एक रेगुलेटरी इशू है। ठीक है। ओके। सो व्हाट आर द कंसर्न्स? सो देयर आर रेगुलेटरी प्रीव्यू, वही है आईटी रूल 2021, उसी के अंदर ही ला सकते हैं हम। तो करंट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन combines video games and online games played for stakes into the same regulatory preview. Okay. So but gaming companies are worried about the lack of distinctions between them and the real money games. Real money games means virtual currency जो गेम के अंदर मिलती है उसकी बजाय तुम कैश पेमेंट करके खेल रहे हो। Purely, video game companies state that their games do not involve staking money and are purely played for entertainment. Real money games and fantasy sports are collectively referred to as the iGaming industry in other countries. तो हमारे यहाँ पे आई गेमिंग इंडस्ट्री अभी आ रही है, लेकिन हाँ ये ट्रबलसम फीचर जरूर है। डिमांड्स वो यही चाहते हैं बस कि इनको अलग अलग ट्रीट कीजिए। हैदराबाद सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इकोनॉमी के अंदर। नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज चोजन हैदराबाद, तेलंगाना for establishing the Center for Fourth Industrial Revolution. So this is important for prelims. So there will be an autonomous non-profit organization, C for IR Telangana, Center for Fourth Industrial Revolution, with a thematic focus on healthcare and life sciences. बस इतना तो सबसे पहले याद रखना है। अब करेंगे क्या? So blur boundaries between digital, physical, biological worlds and is driven by data. Key technology is cloud computing.
Internet of Things, cybersecurity, cyber physical systems. The term 4IR or Fourth Industrial Revolution, coined by Klaus Schwab, who's also the executive chairperson and founder of World Economic Forum. Okay. Major examples of its application: pacemaker, heart के अंदर use होता है. So it's a part and parcel of Fourth Industrial Revolution. The 4 wireless sensors of the pacemaker monitor vitals such as the temperature, oxygen level, and the heart's electrical activity. So heart के अंदर जो pacemaker use होता है, it's like Fourth Industrial Revolution. Xenobots. So these are the first living robots created in 2020 from the stem cells of the African clawed frog and can be programmed using AI. Okay. Then smart railway coaches. So they are built in modern coach factory at Raebareli, UP. So they are also a part and parcel. So here the sensors monitor order level in the toilets, check if the doors are safety closed, avoid fire outbreaks, stop unauthorized travel using CCTV with facial recognition. The technologies. So good. All this is a part and parcel examples of fourth. अब जिसकी examples है ना, xenobots पूछ सकते हैं, pacemaker पूछ सकते हैं. Which of the following are the examples of fourth industrial revolution? तो जहां पे आपको data, cloud computing, internet of things, biological systems, cyber physical systems combined दिखे काम करते, it can be a part of fourth IR. What's the problem? Okay. बाकी concerns mains के हैं, prelims के नहीं हैं. GMRT detects atomic hydrogen. So first is, what is GMRT? It is a giant meter wave radio telescope. Where is this? So this is astronomers from McGill University, Canada, and Indian Institute of Science, Bangalore, have detected a radio signal originating from atomic hydrogen in an extremely distant galaxy. Basic fuel required for the star formation galaxy. So, audible so far? Any troubles? Yes, sir. Okay. अभी हम इस बेसिक फ्यूल के बारे में राइट नाउ कंसर्न्ड क्यों हैं? Let's see. So it emits the radio wave of 21 centimeter wavelength. That is something we detected. Until now, the most distant galaxy detected using 21 centimeter emission was at the redshift of 0.376. Redshift या blue shift ये basically क्या है? Wavelength में shift आता है. जितना ज्यादा distance कोई wave travel करेगी, तो उसके हिसाब से उसमें थोड़ा सा shift आएगा. So it represents a change in wavelength of the signal depending upon the object's location and movement. Greater value of redshift indicates a farther object. तो अभी हमारे पास बहुत दूर से है, तो that is redshift. तो prelims में एक तो redshift याद रखना, ठीक है? This detection was made possible by a phenomena called as gravitational lensing. अब ये दूसरी definition है जो याद रखनी है. It probes the distribution of matter in galaxies and clusters of galaxies and enables observations of the distant universe. यूपीएससी में बहुत सिंप्लीफाइड पूछेंगे कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग हैज बीन सीन इन न्यूज, ये किसके साथ रिलेटेड है? तो 3 चीजें बिल्कुल ही अनरिलेटेड होंगी और चौथी में लिखा होगा कि यूनिवर्स में चीजों को डिटेक्ट करने के लिए, गैलेक्सीज को डिटेक्ट करने के लिए. इतना सिंपल सा क्वेश्चन बना के पूछता हूँ, ठीक है? देन AI AQMS V1.0 for air quality monitoring. What is this? Let's see. This is a technology for air quality monitoring system developed by CDAC, Kolkata. So what will it do? It includes parameters like PM 1.0. अभी तक ये नहीं था, ये नया है. 0.5 और 10 तो पहले से थे. सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब पहले से भी था, ठीक है? तो 1.0 is the one that we are focused on right now and the smallest particulate matter. Biosensing based EDC detection system. So यहाँ पे कुछ खास नहीं है, एंडोक्रीन सिस्टम के ऊपर डेवलप है. देखिए, endocrine disruptors are chemicals that may interfere with the body's endocrine system and produce adverse developmental, reproductive, neurological, and immune effects in both humans and wildlife. So these are endocrine disruptors.
अभी ये एंडोक्रीन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. So that's what they're doing. Then loan loss provision. So RBI recently proposed the framework of adoption of an expected loss based approach provisioning for banking. ये इकोनॉमी में होना चाहिए था, ये गलती से यहाँ पे आ गया, लेकिन पढ़ लो, कोई नुकसान नहीं है. What is this loan loss approach? So under the proposed frameworks, banks will be required to classify financial assets in 3 categories, 1, 2, 3, depending upon the assessed credit losses on them. So loan loss provision होता क्या है? An expense that bank set aside for defaulted loans. अगर कोई पैसे लेके भाग जाए तो उसको बैंक को पैसे अलग करके रखने. So banks set aside a proportion of expected loan repayments from all loans in their portfolio to cover the losses, either completely or partially. So that is the concept. कल को अगर बैंक के पैसे लेके कोई भाग भी जाए तो जिनके पैसे आपके पास सेविंग में रखे गए हैं एटलीस्ट वो सेफ रहे. ठीक है. सुपर कंडक्टिविटी. This is something of an area of fascination for us. सुपर कंडक्टिविटी की अचीवमेंट में एक बेसिक सा कंसर्न ये है कि या तो ये क्रायोजेनिक टेम्परेचर में पॉसिबल है या फिर स्पेशल मटेरियल्स रिक्वायर्ड है इसको रूम टेम्परेचर के आसपास करने के लिए. वो स्पेशल मटेरियल्स बहुत कॉस्टली पड़ते हैं. एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर तो वैसे भी सुपर कंडक्टिविटी होती ही है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है करंट के फ्लो के लिए. सो वहां से इसको वर्कआउट किया गया था. लेकिन अभी वी आर ट्राइंग टू हैव सुपर कंडक्टिविटी एट नियर टू रूम टेम्परेचर्स. दैट इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू डू. और इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ इट इज पॉसिबल, इट्स ग्रेट. सो लेट्स सी हाउ दे आर वर्किंग ऑन राइट नाउ. तो प्रीलिम्स के लिए कितना सा चाहिए? So superconductivity was first discovered in mercury, yet scientists required 111 years to explain how it became or becomes superconducting. As a phenomena इसको explain करना ज्यादा मुश्किल है. ठीक है. ऑब्जर्व कर लिया हमने कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, दैट इज सुपरकंडक्टिविटी. ओके. अब इसकी थ्योरीज नहीं पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी कि कैसे होती है, एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन ड्यू टू व्हिच देयर इज superconductivity. Don't bother right now. Means के लिए भी I would not say, not recommend it because it's too much physics. Hybrid immunity. So once you have got vaccination and you were COVID infected, you have hybrid immunity or superhuman immunity, and you can prevail in next upcoming COVID-19 infections, no problem. फालतू की बातें सब है, ठीक है. क्योंकि अभी बहुत लोगों को ये हाइब्रिड इम्यूनिटी के बाद भी कोविड-19 हुआ है. ठीक है. Whatever is the immunity, the basic concern is, are you getting infected or not? And even if 2 or 10 people are getting infected, that means there is nothing called immunity. What's the point of saying it is better? Yes or no? So anyhow, you just need to remember the immunity which is gained out of COVID-19 plus vaccination. Okay. MOU between IREDA and MNRE. What is IREDA? Indian Renewable Energy Development Agency and Ministry of New and Renewable Energy. What are they trying to do? So essentially, they need to work together to achieve our intended nationally determined contributions at Paris Agreement. Yes. So now they are working on the economic front together. So various performance-related key parameters such as return on net worth, return on capital employed, NPAs, total loans, asset turnover ratio, earning per share, इन सब चीजों के ऊपर उनका MOU साइन हुआ है. कितना पैसा खर्च करके ये काम करना है. ठीक है. इनमें से कुछ वोकैबुलरी थी जो इकोनॉमी के अंदर होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ रख दी. So return on equity, what is this? So the amount of profit or earning of a company generates on the sheer strength of its shareholders equity. बेसिकली लेट्स से मैंने आपके कंपनी के अंदर अगर 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आप मुझे उस 10 रुपए के ऊपर कितने पैसे दे रहे हो. ठीक है. Then ROCE, so it refers to the financial ratio that can be used to assess company's profitability or capital efficiency. So that is return on capital employed. ऊपर लिखा है ना ROCE, capital employed.
जितना पैसा लगाया हमने किसी प्रोजेक्ट में, फर्ज कीजिए, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके ऊपर कंपनी को कितना कमाई हुई, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी. एसेट टर्नओवर रेशियो, वैल्यू ऑफ अ कंपनी सेल और रेवेन्यू रिलेटिव टू वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स. मेरी 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें से मेरा कितना सेल या रेवेन्यू जनरेट हुआ. Then EPS, it is calculated as company's profit divided by outstanding share of its common stock. So EPS is earning per share basically. So let's say कंपनी ने 1 करोड़ रुपया कमाया, तो हर एक शेयर होल्डर को उसमें से क्या फायदा हुआ. To see that, we use the term EPS, earning per share. Okay. Pan transcriptome, what is this? Let's see. Pan transcriptome, which combines transcriptome and a pan genome. तो ये दो चीजें कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. Mapping transcriptome, so complete set of RNA molecules, allows researchers to better understand individuals' gene expression. See here, RNA, ribonucleic acid. So first, if you study RNA properly, RNA is something that will take the coding from DNA and then go to the lysosome, and then in the ribosome will make the protein synthesis. So knowing RNA is also important in this entire aspect of protein synthesis and how the life is functioning at the molecular level. So this is where transcriptome comes. Transcription जो है ना, वो इसी RNA का पार्ट है. tRNA बोलते हैं हम, है ना. There is mRNA and tRNA, ये दो मेजर है. tRNA is for transcription RNA, mRNA is the messenger RNA. Yes. So what is this P transcriptome? So pan transcriptome is the reference that contains genetic material from the cohort of diverse individuals rather than just a single linear strand. So it's an emerging concept of pangenomics in genomics. It's a combination of transcriptome and pangenomics. So a transcriptome is a complete set of RNA molecules in a cell or a tissue called as mRNA, rRNA, and tRNA and other non-coding RNA. तो अलग-अलग तरह के RNA जितने भी. It is the complement of genome, which is the entire set of genetic material in an organism. Pangenome किसको बोलते हैं? It's a reference that contains genetic material from a diverse group of individuals rather than a single individual. Okay. So सारा डेटा इकट्ठा करने की बात हो रही है आजकल. उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं. Okay. So this is how the body goes. From DNA, the message goes to RNA. RNA helps in the creation of protein at ribosomes. Then these proteins take various forms into sugars, nucleotides, amino acids, and lipids. And essentially, these are called the metabolome. Okay. And then these metabolites, they help in creating a particular function. So various sugars, amino acids, etc., lipids, they have their own functions in the body. इसका यूजेज क्या होगा? Discovery of new genes, regulating gene expression, characterizing gene diversity. What we're trying to do essentially is control how the human beings behave, create, procreate, digest, or everything. Okay, fine. RNA mapping. So just like DNA mapping, they are now trying to do RNA mapping. So what all is in RNA? Let's see. It's typically used to study the expression and localization of different types of RNA, including messenger RNA, ribosomal RNA, and transfer RNA. आई थिंक ये सब तो हम पहले से बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये काम कैसे करता है, तो उसके बारे में तो नहीं चाहिए, वैसे भी पूछेंगे नहीं. अभी इसको लेके क्वेश्चन पहले आया हुआ है, देखिए. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायो developments in bioinformatics, the term transcriptome, sometimes seen in news, refers to 2016 में भी क्वेश्चन आया है, देखिए. A range of enzymes used in genome editing. No. The full range of mRNA molecule expressed by an organism. Yes.
डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन, नो। जीन एक्सप्रेशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए के अंदर नहीं है, और ट्रांसक्रिप्टोम किसके साथ है? आरएनए के साथ। A mechanism of genetic mutation of taking place in the cell. No. So using the word gene or genetic should help you differentiate it from DNA. Okay, and for genome editing, any kind of enzyme, that is only one that you have all studied, Cas9. इससे ज्यादा तो हमने किसी ने पढ़ा ही नहीं कुछ, या CRISPR पढ़ा है। एक गाइड आरएनए होता है उसके अंदर भी, आज सुबह वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो CRISPR के अंदर देयर इज अ गाइडिंग आरएनए, जीआरएनए बोलते हैं, और देयर इज Cas9। बस ये दो चीजें होती हैं। ये गाइड करता है कि कहाँ जाना है, Cas9 जाके एक्चुअल में काटता है। ठीक है, सो एसेंशियली द क्वेश्चन आंसर इज लाइक दिस। बट अगर पढ़ा होगा तो कर पाओगे, नहीं तो वहां पे मुश्किल है। ट्रांसक्रिप्टोम अगर नहीं पढ़ा तो अभी ऐसे ही पैन ट्रांसक्रिप्टोम है। ठीक है, लाइक दिस, GM mustard. So now genetically modified mustard called Dhara mustard hybrid DMH11, prelims में वो इतना यूज करेंगे। DMH11 has been seen in news recently. What is it related to? It is GM mustard. Okay, what is this? So production of DMH11 variety is not interfering with honeybees natural pollination practices. One, B के लिए statement है। GM crops क्या होते हैं, पढ़ चुके हैं आप। Let's come to current affairs only. So DMH11 is an indigenously developed transgenic mustard, genetically modified variant of herbicide tolerant mustard. Now, it's a cross between Indian mustard variety Varuna and East European early Hira 2 mustard. दो का क्रॉस है, ये भी याद रखना है। It contains two alien genes, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लेवल पे ये दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं इसमें, बारनेस एंड बारस्टार, ये दो जीन्स हैं। आइसोलेटेड फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम Bacillus amyloliquefacines that enable breeding of high yielding commercial mustard hybrids. Barnase in Varuna induces temporary sterility, because of which it cannot naturally self-pollinate. Barstar in Hira, जो यूरोपियन काउंटर से दिया है, blocks the effect of Barnase, allowing the seeds to be produced. तो मिलके ये ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं seeds. So DMH11 shows approximately 28% more yield than the national check, 37% more than the zonal check, and it can be used, it has been used and approved by GEAC. Bar gene maintains the genetic purity of the hybrid seed. तो ये प्रीलिम्स में ऐसे भी पूछ सकते हैं, बारनेस एंड बारस्टार दे आर रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे भी पूछ सकते हैं। और ये वाला आपको बैक्टीरियम भी याद रखना पड़ेगा, इनकी फंक्शनैलिटी भी पूछ सकता है। तो ये बस यहाँ तक। अब क्यों चाहिए, क्या चाहिए, आगे जाके वो मीन्स का मामला है, अभी नहीं। Should it be there, should it not be there, GM crops are they safe or not, don't bother. Prelims के लिए बस ये इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना। What is GM mustard and DMH11 variety? किसने प्रोड्यूस किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोड्यूस किया है। Okay. Then brain eating amoeba. So just remember the name, Naegleria fowleri. So this is called brain eating amoeba. Single celled organism. Imagine somebody washed their face with it and they're dead. Okay. So entered through nose, traveled up the brain and ate the brain. Then ethylene glycol in cough syrup. So बहुत सारे बच्चे मरे उज्बेकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पे इंडियन बेस्ड कंपनी थी। So the name of the cough syrup was Doc 1 Max, manufactured by an Indian firm. Okay. The cough syrup contained ethylene glycol, a substance that ought not to be present in the cough syrup. Earlier, Gambia also reported unacceptable levels of diethylene glycol and ethylene glycol in Indian manufactured cough syrups, and they are highly toxic, colorless, viscous liquids which have a sweetish taste, and they are often found in contaminants in glycerine.
इंसुलिन ऐड करते हैं, उसके साथ ही ये भी चलेगा। Acute poisoning from EG may result in ataxia, slurred speech, restlessness, disorientation, myoclonic jerks, convulsions, coma, and even death. So 18 children died after that, and action did take place. Indian firm ban ki gayi wo wali. Because India is now the generic pharmacy of the world. We don't want to spoil that name because it brings a lot of export revenue for India. Okay. Then Department of Science and Technology interview is simply for mains, not much for prelims here. Move on. This is mostly policy. For example, they may ask a question like, what is the contribution of Department of Science and Technology to Indian science program or whatever. So in that, you can add this. Okay. Butterfly adaptation and evolution process. So new study has thrown light on many interesting aspects of butterflies adaptation evolution process. Study was conducted on several species of butterflies. So let's see. हमारे यहाँ पे 3 तरह के मेजर एस्पेक्ट्स हैं, मॉडल स्पीशीज, बैटेजियन मिमिक्री स्पीशीज एंड नॉन मिमेटिक स्पीशीज, 3 तरह के हैं. The unpalatable one is called models and the palatable one is called mimics. Butterflies that have evolved to make use of mimicry evolve faster than the species that don't make use of mimicry. Are you understanding mimicry? Here, butterfly अपने environment के अंदर ही merge हो जाती है, दिखती भी नहीं है. That is mimicry. वो एक लीफ या उसके कलर पैटर्न के हिसाब से अपने विंग का कलर पैटर्न इवॉल्व कर लेगी. ये एक कंसर्न है. तो जो जल्दी जल्दी इवॉल्व करती हैं वही ज्यादा देर तक जिंदा भी रहेंगी. ठीक है, सर्वाइव भी करेंगे. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड हियर द फिटेस्ट इज बेस्ड अपॉन अडेप्टेशन. ओके, सो Batesian mimics adapt to avoid predators by evolving similar wing color patterns and flight behaviors. Analysis revealed that not only had color patterns evolved much faster rate, but the members of mimetic community have evolved at a faster than their close relatives. So that's that about butterflies. Maharashtra became the first state in the country to have a state butterfly, actually in 2016. That was the blue mormon, and since then they have been very important. Okay. Whole genome sequencing. So Indian Institute of Science and Education Research, Bhopal, carried out the whole genome sequencing of banyan, that is the Ficus bengalensis, that is the people, ये हमारे 2 major trees हैं, from the leaf tissue samples. Banyan is the national tree. Yeah. तो ये इसका नाम याद रखना प्रीलिम्स के लिए, जो बायोलॉजिकल नेम है, rather botanical name. होल जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है या जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है वो आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ रखा है. ATCG स्टडी कर रहे हैं हम. यूरासेल बेसिकली DNA में नहीं होता, RNA में होता है. ओके. देन एंटी कैंसर mRNA वैक्सीन. So recently, results of the trial of messenger ribonucleic acid, long name, vaccine made by Moderna and MSD, that is Merck and Company, when taken along with immunotherapy drugs, that is Keytruda, has shown promising results against advanced melanoma, it's kind of skin cancer. So mRNA vaccines are probable cure for skin cancer. प्रीलिम्स में इतना स्टेटमेंट आपके काम का है. ठीक है. ओके, हाउ दे डू इट, डोंट बॉदर. ठीक है. वैक्सीन कितने तरह की होती है, हाँ इस पे क्वेश्चन आ सकता है. So there are inactivated vaccines, so in which killed versions of the germ that cause disease are used. Maybe it's a virus, maybe it's whatever. So उसका killed version use करेंगे ताकि वो तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है उसके हिसाब से यूज करें. लाइव एटेन्यूएटेड स्ट्रेन, एटेन्यूएटेड का मतलब होता है वीकेंड, यानी का मतलब वो उतनी स्पीड से रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तुम्हारे अंदर जाके वैसे लाइव वायरस. ठीक है, सो वो लाइव एटेन्यूएटेड है. अब डेड वाले कौन से यूज करें हम, हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो एंड रेबीज. लाइव एटेन्यूएटेड में हम कौन से यूज कर रहे हैं, मीजल्स, मम्प्स, रुबेला, MMR, रोटावायरस एंड स्मॉल पॉक्स. देन mRNA वैक्सीन.
सो आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, है ना, आगे जाके राइबोसोम में। तो एमआरएनए वैक्सीन क्या करेगा? इट मेक्स प्रोटीन इन ऑर्डर टू ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो वायरस जिस तरह का प्रोटीन क्रिएट करता है जिसको देख के इम्यून रिस्पॉन्स आता है, ये बस वैसा प्रोटीन जनरेट करेगा, ठीक है। सो mRNA vaccines have special benefit compared to other types, including shorter manufacturing time because they do not have contain a live virus and no risk of causing disease in the person getting vaccinated. तो आमतौर पे हमने कोविड-19 में ये वाली वैक्सीन यूज की थी, mRNA वैक्सीन। देन सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसैकेराइड और कॉन्जुगेट वैक्सीन्स, ये क्या करते हैं? So they are specific pieces of the germ. तभी हम उसका सब यूनिट मतलब प्रोटीन, शुगर या कुछ ले लेंगे, पूरी वायरस नहीं लेंगे। कैप्सिड मतलब उसकी सिर्फ ऊपर की कवरिंग, जैसे कैप्सूल का ऊपर की लेयर होती है, ठीक है। सो दे गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स and they can also be used in people with weakened immune systems and long-term health problems. So for example, in case of human hemophilic influenza type B, hepatitis B, and human papilloma virus, pneumococcal disease. So these are the diseases where we are using this kind of vaccine. Toxoid vaccines. Here we are trying to use the toxin which is given off by the germ that causes the disease to launch the immunity. So they create immunity to parts of the germs that causes a disease instead of the germ itself. germ हमारे अंदर ही रहेगा, लेकिन जैसे ही वो टॉक्सिन रिलीज करेगा, वो टॉक्सिन के अगेंस्ट हमारे पास रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल इन डिप्थेरिया एंड टेटनस। Then viral vector vaccine. So here we use a modified version of a different virus as a vector. तो virus ही हमारे लिए medicine लेके जाएगा to deliver the protection. So several different viruses have been used as vectors, including influenza, vesicular stomatis, stomatitis virus, measles, adeno, so which causes the common cold. Adenovirus is one of the viral vectors used in some COVID-19 वायरल वेक्टर वैक्सीन, उधर भी ये यूज किया गया था, ठीक है। तो ये प्लीज याद रखना है कौन सी किस तरह की वैक्सीन हैं, ये अभी भी रेलेवेंट है, ठीक है। देन आईएनएस वागिर। इंडिया में ना अभी क्या है कि 1970s में, इनफैक्ट 1973 में प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I, ये दो प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे सबमरीन्स के लिए, क्योंकि जो वॉरशिप्स हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाहे कुछ भी है, ये तो ड्रोन से देखे जा सकते हैं, एयरक्राफ्ट से इनके ऊपर बॉम्ब गिराया जा सकता है और ये खत्म हो जाता है, उसके बियॉन्ड इनका फिर कोई काम नहीं। लेकिन सबमरीन्स ऐसी हैं जो बिना डिटेक्शन के कहीं पे भी पहुंच सकती है। इंडिया को जैसे जैसे अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, वैसे वैसे उसको सबमरीन सेक्टर में डेवलपमेंट करनी होगी, ऐसी 1973 में समझ थी। तो प्रोजेक्ट 75 और 75I इस तरह से शुरू किए गए थे, और हम ये सोचते थे कि 2030 तक हमारे पास ऑपरेशनल 40-50 पनडुब्बियां होंगी, जिनके बेसिस पे हम ये इंडियन ओशन का रीजन जो है वो पूरा कवर कर पाएंगे। लेकिन इंडिया इस मामले में बहुत स्लो रहा है। इनफैक्ट पहली सबमरीन प्रोजेक्ट 75 की 2017 में डिलीवर हुई, दूसरी 2019 में डिलीवर हुई, तीसरी 2021 में डिलीवर हुई। ये वो थी जो 1973 से बनानी शुरू कर रहे थे, ये तीनों तब से चल रही। आईएनएस कलावरी, आईएनएस खंडेरी एंड आईएनएस कर्णराज, ठीक है। अभी उसके बाद 2021 में एक वेला जॉइंट सर्विस, देन सिक्स्थ एंड लास्ट सबमरीन इज बगशीर। सो ये सब 2023 तक ये 6 सबमरीन हमारे पास आई हैं अभी तक। हम सोचते थे 30-40 बनेंगी 2030 तक, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है। आज भी हम एग्रीमेंट करते हैं कि नई सबमरीन बनाने का, तो 4 से 5 साल लग जाते हैं एक सबमरीन को डेवलप करने के लिए। और मोर ओवर ये जो सबमरीन्स बन रही हैं प्रोजेक्ट 75 के अंदर, ये सारी की सारी नॉर्मल सबमरीन्स हैं। ये दे आर बिल्ट अपॉन द डीजल इंजन प्लेटफॉर्म। जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं अब उनकी जरूरत है, और न्यूक्लियर सबमरीन में अभी नई टेक्नोलॉजी की सारी टेस्टिंग होनी है। उसको अगर बनाने बैठेंगे तो हमें 7 से 10 साल चलता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में भी 10-12 साल लग जाता है। तो अगर आज हम कमीशन करेंगे न्यूक्लियर सबमरीन बनानी, तो इट्स लाइक गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। रिसेंटली
yesterday I think this decision has been taken to create a nuclear submarine for India. Okay, बट वो डिसीजन के अंदर अभी एमओयू साइन होने हैं, पार्टनर्स बनने हैं, सब होना है, फिर बनना शुरू होगा एक्चुअल में, और फिर भी उसमें अभी टाइम लग जाएगा. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है प्रोजेक्ट 75 एंड 75 आए, सो बी नोन अबाउट दिस. ओके, और ये स्कॉर्पियन क्लास और ये सब ये क्या है, बेसिकली रशिया से ही ज्यादा इंपोर्ट करते थे पहले, तो उन्हीं के हिसाब से ये सब चल रहा है. डीप फेक टेक्नोलॉजी, तो आपने बड़ी बार ऐसे वीडियोस देखी होंगी जिसपे सर किसी और का लगा रहते हैं, नीचे बॉडी किसी और का है ना, और मीम्स चल रहे होते हैं. so they are deep fakes. कई बार क्या होता है कि somebody's dialogue and the other person had not even said it, but उसके मुंह से बुलवाए जा रहे हैं, ऐसे भी हैं. So they are deep fakes. So you can swap the face, swap the voice without having any kind of differentiation, and that is deep fake. Okay, this is allowed by technology. So you can manipulate videos, images, audios utilizing computer and deep learning. So fake news is generally created by this. इसीलिए अभी जो पंजाब पुलिस का सर्कुलर आ रहा है बार बार कि फेक न्यूज पे बिलीव मत करो, तो हो सकता है किसी आईजी पुलिस ने अभी, जैसे चंडीगढ़ में उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज 3 बजे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई थोड़ा सा ऑल्टर करके ये बोले कि हमने इनकाउंटर कर दिया या हमने ऐसा कुछ कर दिया, अगर ऐसा बोल के उन्हीं के मुंह से वो लिपसिंक भी वैसे ही कर देगा, करा के और अपलोड कर दिया, खत्म, फिर वायलेंस एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट. Yes or no? So that is the problem with this deepfake technology. Okay, so it originated in 2017. Anonymous Reddit user called himself deepfakes, so that's where it originated. Now this user manipulated Google's open source deep learning technology to create and post pornographic videos, and that's where it got created. Okay, misuse anytime. It can be used to create communal violence, election time results, anything. Okay. Now in India, there are no legal rules against using deepfake technology. We only have, maybe IT Act. That's it. उसके अगेंस्ट ही रूल होंगे, या फिर जो भी कम्युनल वायलेंस का हमारे पास प्रावधान होगा वो लगाएंगे, बट पहले बंदा ट्रेस भी करना पड़ेगा. ओके, नेशनल मैथमेटिक्स डे. सो श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर. दैट्स इट, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. रामानुजन नंबर किसको बोलते हैं? 1729 is called Ramanujan number. Why? It is the smallest number which can be expressed as the sum of two different cubes in two different ways. So is the sum of 10 and 9. 10 का क्यूब होता है 1000 और 9 का क्यूब होता है 729. Okay. Similarly 12 and 1. Okay. Samudrayan mission. So what is this? Ministry of Earth Sciences has started this Samudrayan mission. इसको लॉन्च करेंगे 2026 में. क्या करेगा? Sending 3 personnel to 6,000 meter depth in a vehicle called Matsya 6000 for exploration of deep sea resources like minerals. Basically, what kind of minerals? We got polymetallic nodules. Yeah. Okay. So India's first unique manned ocean mission, and it's part of RS 6000 rupees 6,000 crore deep ocean mission. बस इतना सा. अभी डीप ओशन में हमें क्या क्या मिल सकता है? पॉलीमेटालिक नोड्यूल मिल सकते हैं और लैंथनाइड एक्टिनाइड्स मिल सकते हैं. That's what we are hunting for there. We're not going fishing. Okay. अभी और कौन कौन से ब्लू रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स हैं? So there is a list of them. इतने ज्यादा प्री ओरिएंटेड नहीं है, ये मेन्स ओरिएंटेड ज्यादा है. BF7 वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, नया नया आता रहता है कुछ कुछ. So is believed to be driven, जो चाइना के अंदर सर्ज हुआ था अभी 2022 में, so that is believed to be driven by BF7 सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन. So बस इतना ही, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना कौन से वेरिएंट आया गया, अब तो इतने हो गए कि यूपीएससी का क्वेश्चन उस पर बनता नहीं. ठीक है. वेरिएंट नया बन कैसे जाता है?
So when a virus multiplies, it doesn't always manage to produce an exact copy of itself. This means that over the time, virus may start to differ slightly in terms of genetic sequence. Okay, so it keeps mutating from one to the another. So there are changes in RNA, and therefore there are changes in RNA behavior. This is known as mutation. ये अगर आम आदमी में हो जाए तो वो बहुत अजीब तरह से होगा, मे बी इट कॉजेस अ सीवियर डिजीज और मे बी डेथ. बट वायरस के अंदर अब वायरस तो नहीं मर रहा, लेकिन उससे लोगों को परेशानी हो रही. ठीक है. IDEX and Defense India Startup Challenge. So IDEX basically is Innovation for Defense Excellence. अभी हमारा एक पॉलिसी है कि हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हों डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, तो उसी के लिए प्रोग्राम है. इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 फॉर फास्ट to foster innovation and technology development in defense and aerospace. Okay. Provides funding and grants to MSME, startups, innovators, R&D, academia to carry out research and development, and support beyond rupees 1.5 crore to 10 crore. इतने का support दे सकता है per organization. Core objectives: indigenization and innovation. Two things. Funding. So IDEX is funded and managed by Defense Innovation Organization. Achievements: it has got Prime Minister's Award for Public Policy Innovation in category for the year 2021. What is this Defense Innovation Organization? So it's a not-for-profit company under Companies Act 2013. It's funded by Hindustan Aeronautics Limited and Bharat Electricals Limited. Okay. तो एक तो ये याद रखना है, DIO, एक IDEX, बस फ्री में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा. Then HPV vaccine for cervical cancer. See, there is human papilloma virus vaccine, and this can also be used to cure cervical cancer. That is what we are trying to do. Okay. And India is expected to roll out indigenously developed Cervavac vaccine for the prevention of cervical cancer among the girls aged 9 to 14 years through their schools by mid 2023. So especially for girls, this will be done. बस प्रीलिम्स के लिए अभी इतना ही याद रखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है. Then sand battery. Just like you got current stored in lithium ion battery, you can store that in sand also. How? So sand battery can store significant extent of thermal energy and aid clean energy solutions. Finland has installed world's first fully working sand battery in its town called Kankanappa, capable of storing green power for months at a time. They can solve the issue of year-round supply. आमतौर पे बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है अगर उसको चार्ज करके रख भी दो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होता, लेकिन ये एफिशिएंट है. कैसे बनता है? एक तो ये याद रखना प्रीलिम्स के लिए, फिनलैंड एंड कनकनप्पा. इस पार्ले याद रखना आसान है क्योंकि हिंदी में सैंड को कनकन आप याद रख सकते हो. A sand battery is a high temperature thermal energy storage that uses sand and sand like material as a storage medium, and it stores energy in sand as heat. Sand can withstand a lot of heat, can become melted even. Okay. Its main purpose is to work as a high power, high capacity reservoir for excess wind and solar energy. Batteries में store नहीं होता ना, तो इधर store कर सकते आराम से. And sand is cheaply available. Now, sand battery helps ambitiously upscale the renewable energy production by ensuring there's always a way to benefit from clean energy, even if surplus is massive. Now, so Russia, the supplier of 40% of European Union's natural gas supply, has shut off its pipeline to large extent. So, जो हमने पढ़ा था कि there are two basic pipelines that run from Russia to Europe, and both of them are dead now because of the Russia-Ukraine war going on. Yeah. So इस वजह से ऐसी चीजें बहुत काम आ सकती हैं. सैंड बैटरी करेगी क्या? ये हीट के फॉर्म में इतना यूज हो गया, ठीक है. Remaining 70% is stored in sand battery, heating the sand up to 600 to 1000 डिग्री सेल्सियस. जब चाहिए दोबारा इसी हीट को दोबारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं.
and then it can be used again like this. So you're storing excess of energy as heat, simply. Then Incovac intranasal COVID vaccine. सिर्फ इसका नाम याद रखना है. What is this Incovac? So it's the world's first intranasal COVID-19 vaccine, okay, approved as a booster dose, and it's developed by Bharat Biotech, same company जिसने पहले भी बहुत वैक्सीन बेची है गवर्नमेंट को, ठीक है. Then Japan's new policy on nuclear energy. Japan got a bad taste with nuclear energy after the Fukushima Daiichi plant meltdown, and even today there are troubles because of that. क्यों हुआ? सुनामी आई अर्थक्वेक के बाद, और उसकी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट डैमेज हो गया, एंड देयर वाज अ मेल्टडाउन and leakage. So therefore, there is a major reversal. So it is Japan's major reversal of its nuclear phase-out plan following the Fukushima crisis in 2011. So recently, Japan has adopted a new policy of promoting greater use of nuclear energy to ensure a stable power supply. अब दोबारा से वो 10 साल बाद न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ाने की बात कर रहे हैं. तो 2011 की सुनामी के बाद फुकुशिमा एक्सीडेंट हुआ था. Now again they want to go ahead with the nuclear energy power because it has a lot of technology, it has a lot of fuel, so it can use it. Okay. आज भी ना कहीं पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर एस्टैब्लिश हो रहा है, उसका जो कोर बन के आता है वो जापान से बन के आता है. अगर इंडिया में बन रहा है तो उसका जो रिएक्टर कोर बन के आता है वो जापान से बन के आता है. So that's why Japan has a lot of capability in that, and it can definitely utilize it for its own. Okay. So presently, most nuclear reactors in Japan are more than 30 years old, and the policy seeks to maximize the use of existing nuclear reactors by restarting as many of them as possible and prolonging the operating life of the older reactors beyond their 60-year limit. कितने साल भी चला लो, क्या टेंशन है, मेंटेनेंस होना जरूरी है. Okay. Presently, it is just 7% of Japan's energy supply. Then uncontrolled re-entries of satellites, basically the space debris falling off. Okay. So Outer Space Institute has called for both national and multilateral efforts to restrict uncontrolled re-entries of satellites because it's damaging to the environment. It may hit the people, definitely. Can create a lot of problems. Uncontrolled re-entry का मतलब यही होता है कि कहीं पे भी गिर रहा है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे. कंसर्न्स यही. ओके. तो इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पता होना चाहिए है क्या. That's that. So this covers your current affairs from December to March. Next effort in tomorrow's class will be जो क्वेश्चंस आ रखे हैं दिसंबर से मार्च के, इन्हीं के ऊपर, साइंस एंड टेक के ऊपर या इसके साथ रिलेटेड, और जितने उससे पहले के करंट अफेयर्स है, ऐसे 3-3 महीने करके पीछे जाएंगे हम, उनको वर्कआउट करेंगे. तो आप जब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इनको याद करने की कोशिश करोगे, सबसे पहले सबसे ज्यादा फोकस देना है इन 3 महीनों के ऊपर. फिर सेकेंड ग्रेड फोकस देना है पिछले 3 महीने. फिर उससे थर्ड ग्रेड फोकस देना उससे पिछले 3 महीने. क्वेश्चंस क्योंकि इस तरह से आए हुए हैं, ठीक है. प्रायोरिटी शुड बी टू द नियरेस्ट करंट अफेयर. ओके. So next I'll take up the class in the morning tomorrow, 8 a.m. on the same topic of science and tech current affairs. Okay. Evening will not have the class. Fine. Thank you. Take care.